So we're very lucky here to have Mansoor Lashari, who is a very close friend, and we've known each other since childhood. Mansoor is a graduate from Cardiff University. He's completed his master's from the business school. Since then, he's done exceptional things. One, he is a founding member of Bayan. He is an exceptional musician. He has also ventured into entrepreneurial journeys. He's set up BarqBox Technologies, which is a lithium ion battery provider, and he provides all over Pakistan. And he's also set up Sozo Adventure Park. Mansoor, thank you so much for taking the time out today. I know you're really busy and you're probably even traveling to Islamabad today, but thank you for taking the time out. Hassan, thanks for having me. That's quite an introduction, man. Thanks. Many well deserved. So I wanted to just give you an update. So the most of our viewers are youngsters, potentially in their undergrad or even younger, who are thinking about the next steps in their journey. And I wanted to start early on when you decided to pursue your master's, and that's especially at Cardiff University. So what made you make that decision, one, to pursue your master's for the course that you Mhm. went for? And then why particularly Cardiff University? Yeah, to be honest, when I graduated from college in Lahore, I actually did not want to do my master's. I wanted to get straight to work, but my father and other elders in my family felt that it was a wiser move to complete my entire education in one go. And they also felt like it would be a wiser move to experience living away from home before I actually came back and joined my work or whatever I wanted to do in Pakistan. So it was actually them pushing me, and when they pushed me, I started to do my research, and I felt like there were so many options I couldn't really understand where to go. I did know I wanted to do something related to entrepreneurship and business management, something related to maybe a supply chain, something related to managing business models. I think that's where you came in. I contacted you at Naseem Khan Consultancy, and I felt like I just needed somebody to help me clear the noise and to help me move forward. And I think when we started I mean, it's a long time ago. I mean, this is almost 9 years ago. Can you imagine? Yeah, definitely. But at that time, I think when we sat down, you gave me a couple of options, but this one in Cardiff really stood out to me. And I remember the reason why it stood out to me was not just because of the program itself, which I felt was very interesting. It was covering so many different things, different approaches to revenue models and entrepreneurship, and but also I just really liked the city. I really liked Cardiff. Like when I searched it up, I felt it felt really comfortable and safe. So I think it is not just the teachers or the program or the university, it's also the larger context around it that helped me decide that I wanted to go. And so obviously, you've grown up in Lahore, you spent your schooling life here, your university life here. Hmm. Is it a huge culture shock to all of a sudden go and live on your own in a community where you had no experience or exposure? And how did you think the university and the city welcomed you? And obviously, over the period of a year, helped you develop in terms of your personality? Oh yeah, I think it changed everything. I think I generally had a very sheltered life before then, and I think it's um, I was in Aitson with you, of course, and then uske baad college as well, just nearby in the same city. So living alone was never a concept that I had partaken in any way. एंड उससे आपको एक थोड़ी सी सेफ्टी भी फील होने लग जाती है। आपका अपना शहर है, आपको पता है आपकी फैमिली यहाँ पे है, आपकी फैमिली का इस तरह होता है लाहौर में, आपका कुछ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी होता है। एंड इन इन माय केस आई फेल्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो प्रिविलेज भी इतना था और अभी भी है। सो आई ऑलवेज फेल्ट कि ठीक है ना, अपना शहर है, क्या ही हो जाएगा। तो आपको एक सॉर्ट ऑफ एक सेंस ऑफ consistent safety or security होती है, but that doesn't really emanate from yourself. It comes from knowing that you have other people to take care of you. I think वो एक सबसे पहली shocking चीज थी। I remember when I first realized कि okay यार, I'm in this other city, which is another country, which is oceans away from where my family is and where all this influence and privilege is. But जहाँ पे अभी मैं हूँ, which is Cardiff, वहाँ पे मैं ही सिर्फ अपना ख्याल रख सकता हूँ, which I think is generally good for your psychological development to understand that you are the only one responsible for your safety.
वो एक मेजर शॉक डेफिनेटली था मेरे लिए, एंड आई थिंक द सूनर द बेटर ये ऐसा शौक है। इट हेल्प्ड ऑल्सो कि कार्डिफ इतनी मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, काइंड ऑफ लाइक अदर सिटीज लाइक न्यूयॉर्क और डीसी और मे बी लाइक इन यूके लंदन है, इवन मैनचेस्टर टू बी ऑनेस्ट। By that I mean कि I feel like कि क्योंकि वो कार्डिफ थोड़ा सा removed है from such large financial and infrastructural centers, तो वो the people and the general environment is a bit slower, it's a bit calmer, it's also much warmer and nicer वहाँ पे, the people that is, you know, so I felt like that also really helped feeling settled in. um, and I think, of course, then uske baad, once the classes started, I felt कि the what we were studying, क्योंकि मेरा interest था उसके अंदर, I was able to really throw myself in there. I remember that year in Cardiff being very transformative. I worked as well in different jobs. I was also gymming. I made loads of friends. एंड आई थिंक एक और चीज जो आप कल्चर शॉक का कह रहे हो ना, वो ये भी होता है कि लाहौर में रह के या पाकिस्तान में रह के यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट लाइक यू, आपकी बहुत थिन स्लाइस होती है, या लेट्स से बहुत छोटा बबल होता है। अब बाहर दुनिया में जाके यू मीट सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, कि आपका दिमाग स्ट्रेच हो जाता है, आप खुल जाते हो कि और कितने मसले मसाइल या और कितनी डिफरेंट चीजें हैं दुनिया में टू बी एक्सपीरियंस्ड। ट्रैवल करें, लोगों से बातचीत करके आप जो समझते हैं, आई थिंक उससे बहुत दिमाग आपका खुलता है, एंड अल्टीमेटली इट गिव्स यू मोर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द वर्ल्ड। So, like, if there was a student in your position at that time, so who is currently at university in the UK, irrespective which university that is, what advice would you give to them at this point so that they actually make the most of it? A student going to Cardiff right now? So not just Cardiff, but let's say a kid who is at any university in the UK studying. हाँ, ओके। Uh, what advice would you give them that one, obviously they make the most of it in terms of their academics. That's a separate thing. But personally, हम्म in terms of development, how should they actually utilize the university in the city? What advice would you give them? आई थिंक ये बहुत एक फिट चीज होती है। आप यूके में जब होते हो यू ऑल्सो रियलाइज, और अगर मैं थोड़ी सी एचसन या लम्स एलएससी सेंट्रिक थोड़ी सी बात करूंगा, बट अब यहाँ पे जब आप जाते हो स्कूल में तो आप चार दीवारी में होते हो, राइट? एंड वो जनरली एक सेंस ऑफ चार दीवारी होती है कि इससे बाहर आपने नहीं जाना। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि आप इतना इजिली बाहर निकल रहे हो अपने स्कूल से या अपने कॉलेज से। जनरली स्पेशली फॉर अ गर्ल यू आर एक्सपेक्टेड टू काइंड ऑफ स्टे विद इन द प्रेमिसेस। व्हेन यू आर अब्रॉड तो यू डिसाइड कि आपने क्या करना है, अपने क्लास में जाना भी है, नहीं जाना। आई थिंक के अदर देन फोकसिंग ऑन स्टडीज, वन वन थिंग आई थिंक दैट रियली हेल्प्स इज कि आप जरा जान लगा के डिफरेंट सोसाइटीज और डिफरेंट कम्युनिटीज को ज्वाइन करो। ज्वाइन नहीं भी करना तो एटलीस्ट जाके ऑब्जर्व तो करो एंड सी व्हाट यू कैन एंजॉय। एंड आई थिंक ये बेस्ट टाइम होता है टू हाउ वुड आई पुट इट, लाइक टू डिस्कवर व्हाट इट इज यू लाइक। यू नोबडी रियली नोज व्हाट दे एक्चुअली लाइक। पैदा होते साथ तो नहीं पता ना आपको, आपको एक्सप्लोर करके ही देखना पड़ता है। डू यू लाइक वर्किंग आउट, डू यू वांट एमएमए, डू यू वांट स्पोर्ट्स, डू यू वांट स्विमिंग? एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट व्हाट आई फेल्ट इन कार्डिफ एंड इवन मोर सो इन लंदन इज कि इफ यू कैन थिंक ऑफ एन एक्टिविटी, उसकी कम्युनिटी होगी वहां पे। यू जस्ट इट्स ए गूगल Because सर्च अवे। that's right. वो मुझे बहुत You कमाल have बात लगती है। over 200 societies over there. या हर चीज मिल जाती है आपको, सो आई थिंक वो एक्सप्लोर करना भी बनता है। एंड वहाँ पे लोग जनरली काफी इंक्लूसिव भी होते हैं। शायद उनको डर लगता है कि हम गलती से कोई रेसिस्ट बात ना कर दें या जो भी है, बट उनको वो जनरली बहुत इंक्लूसिव होते हैं। सो इट्स ग्रेट, आप अपने आप को इतना एक्सप्लोर कर पाते हो। True, true. So since you've come back, I've seen you grow in terms of your entrepreneurial journey, and it just seems like you're doing everything at the same time. So, how do you feel that the business school and then the university has sort of helped develop that, you could say, instinct within you? हम्म आई थिंक जब आई हैड मेनी डिफरेंट रियलाइजेशंस व्हेन आई वाज इन कार्डिफ, घर से दूर होके। आई आल्सो हैड टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, एंड आई फील लाइक उस टाइम पे आई डिड रियलाइज कि आपको जो छोटी सी जिंदगी है 4 दिनों की, उसमें आपको जितनी जान मार सकते हो मार लो। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्ले एंड यूर अ कैरेक्टर, एंड देन यू नो इफ यू
in a healthy enough way, remove yourself from the consequences, और कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब सक्सेस या फेलियर, लाइक और डिसलाइक, इन चीजों से अगर आप दूर थोड़ा सा हो जाओ, तो यू स्टार्ट रियलाइज कि अच्छा यार, ये छोटी सी जिंदगी में मैं जितनी जान लगाऊंगा, देखें तो सही होता क्या है। और आई थिंक कि वो सेंटिमेंट उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग था, अब इतना ज्यादा नहीं है। अब थोड़ी सी रियलिटी और सेट इन हो चुकी हुई है कि कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बट उस टाइम पे, having made these realizations, I felt like I wanted to come back and try all the things that I really wanted to try, instead of doing it linear कि पहले एक चीज करूं फिर दूसरी करूं। I just thought कि सारा कुछ ही कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। That included going into renewable energy. um, my thinking for it is कि renewable energy critical है इंसानियत के लिए, और उसके अंदर I just want to be a part of it, and so वो शुरू करना। म्यूजिक का शौक तो यू वी बीन टुगेदर इन स्कूल, यू सीन कि म्यूजिक का शौक तो मुझे स्कूल टाइम से था। um, तो the push behind it was definitely realizations that came in Cardiff. um, the people I talked to, for example, several people, like I had this friend of mine who was French. He was from Africa. He was from Rwanda. And उस time पे when we had met, um, several years ago, there was a genocide in Rwanda. You might know about it. Yeah. His he lost many loved ones in that genocide. And as we talked about it, and I got to know him better, and we became friends. I'm just giving you one perspective कि I realized कि अच्छा, हमारी जिंदगी कितनी आसान है। यहाँ पे एक बंदा है जो इतना एम्बिशियस है और फनी है और अच्छा इंसान है, बट देखो ना उसने कितनी मुश्किलात फेस की हैं टू बी वेयर ही इज, और हम कितना आसानी से आ गए हैं। अब I've met many people with different stories. Some were great, some were very heart-wrenching, and these different stories kind of help you realize कि यार आपको ये जो जिंदगी मिली हुई है, you really must make the most of it, और टाइम इतना है नहीं, तो लिहाजा आप निचोड़ो जितना आप निचोड़ सकते हो। ये जनरल आई थिंक जिस मुझे मिली वहां से थी, और वो उसी को मैं उसी को यूज करी जा रहा हूँ अभी तक। That's quite an interesting approach to have. And then I think what that does is in a very short period of time, you get maximum experience. And I guess, I mean, when you're young, you have a lot of energy. And if you try and expel as much energy and utilize it well, and then build on those experiences, aage to then it's only progress. ट्रू। So आई मीन इट डजंट टेक now अवे you're फ्रॉम द doing फैक्ट very कि कार्डिफ interesting. में जो चीजें पढ़ाई थी। हाँ, गो Yeah, अहेड yeah, go for आस्क। it, go. So you're doing very मैं वही interesting कह रहा things था, आई and फेल्ट they're लाइक very मैं पढ़ाई को बिल्कुल ही मिस करा रहा हूँ। गो ऑन, गो ऑन, सॉरी। you want to finish? I'll let you finish. I'll let you finish. आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं बिल्कुल पढ़ाई को मिस करा रहा हूँ वहाँ पे। ऑफ कोर्स मैंने जो चीजें पढ़ी थी फ्रॉम द लेक्चर्स एंड द डिफरेंट प्रोफेसर्स, वो ही चीजें मैं अप्लाई कर रहा हूँ बिजनेस में, तो उसका फायदा हो रहा है। लेकिन आई पर्सनली ऑलवेज फेल्ट लाइक कि जो चीजें पढ़ी हैं वो तो आपको फायदा देती ही देती हैं। यूर डायरेक्टली पेइंग फॉर दैट, राइट? यूर पेइंग फॉर द लेक्चर्स दैट यूर गेटिंग, एंड वो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको मैक्सिमाइज करो। इट्स बियॉन्ड दैट, द इंटरपर्सनल, द रिलेशनल एंड द मोर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स, जो आप वो आप खुद, यू नॉट पेइंग एनीबडी टू टीच यू दैट, दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑन योर ओन, एंड यू हैव टू बी ओपन टू एक्सपीरियंस इट। आई थिंक वो मेरा ये बस ये पॉइंट था बीच में। Hani, I think you're right. It teaches you a lot of responsibility at the same time because initially you're not pushed to actually take charge. When you हम्म। join university, everything on you. So everything is in front of you academically and in terms of हम्म। personal development. It really depends on if you take that opportunity up and actually make the most of it. Yeah, that's true. So it's very interesting what you're doing, and it's very different from one, what a lot of people are doing in Pakistan. So, one, you're running an adventure park. Secondly, you're running a lithium ion industry in Pakistan. So, what made you get into these two different things? I mean, they're very different from what's going on in the normal business norms. And in a way, it's so obviously the easiest thing to do when it comes. Well, one part is just to build a restaurant in terms of entertainment. And it's more likely to run in cities like Lahore and Karachi, but you're targeting entertainment, one, and then secondly, you're targeting Hmm. technology and the future of technology. So what really made you get into these two different things?
हम्म। सो कार्डिफ में मेरी जो एक थीसिस का प्रोजेक्ट था ना, इट वाज टू वर्क विद अ कंपनी that wanted to expand from UK into Europe. The product that they made was a battery pack, and वो बैटरी पैक ऐसा था कि it was meant to be used for allied machinery on vehicles. For example, आपके पास एक ट्रक, फायर ट्रक है या एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के अंदर डिफिब्रिलेटर होता है या इक्विपमेंट होता है, उन चीज़ों को पावर करने के लिए वो स्पेशल बैटरीज बनाते थे जो आप गाड़ी के अंदर रखोगे। अब कीप इन माइंड दिस इज 9 years ago। उस टाइम पे टेस्ला नहीं था, मतलब टेस्ला का आई थिंक शायद रोडस्टर सिर्फ था, तो इट वाजंट अ मेन स्ट्रीम थिंग, ईवीज weren't मेन स्ट्रीम उस टाइम पे, होम एनर्जी स्टोरेज वाया बैटरीज wasn't a mainstream thing उस टाइम पे। बट व्हेन आई went to this company's factory for the first time, इट वाज 2 hours away from Cardiff, और खूबसूरत था, मतलब बिल्कुल जो वेल्श कंट्री साइड है, जस्ट घास घास है और बीच में ये फैक्ट्री थी। व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज कि उन्होंने जो वो जो बैटरी पैक्स बना रहे हैं उनके अंदर वही सिलेंड्रिकल सेल्स हैं जो उस टाइम पे हमारे लैपटॉप्स में होते थे। अब तो लैपटॉप्स भी बहुत पतले हो गए हैं, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, बट उस टाइम पे जो सिलेंड्रिकल सेल्स होते थे वही वो यूज कर रहे थे। और मुझे वो कमाल बात लगी, लाइक वाओ यार, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स तो सेम चीज है, एंड थ्योरेटिकली आप पैरेलल और सीरीज कनेक्शंस करके आप इन सेल्स के थ्रू बहुत बड़ी बैटरीज भी बना सकते हो। So then I remember having a conversation with the person who owned that company. Okay, why not make even bigger batteries? Like, why do you just want to make peripheral batteries for these tools? Why not make a battery that's big enough to power like a bike or even a four-wheeler, or power your entire factory? Like, आप तो कुछ भी बना सकते हो इस तरह। But he didn't seem very interested in this idea. He wanted to continue with what he was doing. वो काम भी चल रहा था उसका। And so then I returned to being a good boy। और मैंने उनके साथ बैठ के मार्केटिंग प्लान सारा बना लिया यूरोप का एंड व्हाट नॉट। पर वो आइडिया मेरे जेहन में फंस गया। एंड व्हेन आई केम बैक आई रिमेंबर आई न्यू अ फ्यू प्रोफेसर्स इन लम्स, and I reached out to them and they seemed very interested as well. We applied for funding, and the idea was to make a battery that could replace the जो गंदी पानी वाली बैटरी आप अपनी यूपीएस के साथ लगा रहे होते हो। तो वो इतनी बड़ी बैटरियां होती हैं, इसके साथ अब छोटी बैटरी बन जाएगी, वो ड्राई भी होगी, पानी भी चेंज नहीं करना, एंड यू कैन मेक इट रियली फन, हैव एन ऐप विद इट। एंड तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट था। But then वक्त के साथ साथ as the concept of EVs grew and solar became much cheaper and more accessible, it became clear कि जो दुनिया की इंडस्ट्री है वो इस तरफ मूव कर रही है। इस तरफ से मतलब ये है कि रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मूव कर रही है, विंड एंड सोलर। बट देन व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नो विंड एंड रात का टाइम है, सो इट बिकेम वेरी क्लियर कि आपको बैटरीज की जरूरत होगी। एनर्जी स्टोरेज is critical to renewable energy का infrastructure around the world, and it's continuing to be so. So I remember उस time पे me and the professors at that time would imagine कि there would eventually be batteries big enough to fill containers, like megawatts की batteries होंगी। It felt ridiculous at that time, and this is 2015 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। And अभी it is a reality। BarqBox can make very large batteries, अभी तक हमने नहीं बनाई, but दुनिया में ये चल रही हैं large like मतलब multiple megawatts की batteries। Um, so currently, BarqBox covers batteries for UPS, solar, and for electric vehicles as well. And मतलब माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है। We're selling across Pakistan. We have service centers across Pakistan as well. But I felt उस time पे that the possibility I learned through that thesis project in Cardiff, and फिर उसके बाद तो of course इंडस्ट्री जैसे ग्रो की है, तो I've been able to follow through। जो एडवेंचर पार्क का आप कह रहे हो वो तो आई फील लाइक एक फैमिली लेगेसी है। माय फैमिली कंपनी इज अ थीम पार्क इन लाहौर। सो आई फेल्ट लाइक कि आई वांटेड टू आल्सो डैबल एंड सी कि उसके अंदर भी क्या मैं कर सकता हूँ नया। बहुत छोटा प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू द लेगेसी फैमिली प्रोजेक्ट, बट आई जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ गेट इन एंड सी कि वो बिजनेस मॉडल्स अब कैसे हैं, विल इट बी फन टू डू इट। If you ask me now, I think BarqBox, the battery company, is much more fun than the adventure park. Um, लेकिन Oh, interesting. um, yeah, just I felt like I wanted to try it, you know. एंड एक और चीज ये भी है कि एवर सिंस आई हिट 30 आई रियलाइज कि यार बहुत ज्यादा मेहनत है, इतनी मेहनत नहीं हो रही मेरे से, तो मैं कहीं ना कहीं सफर
कर रहा है काम. I was saying that it's not just the technology itself, it's also the systems and the services Hmm. behind that technology that Hmm. actually set it up and set it up really well. So, a personal experience is obviously, I was sitting down with you and having a conversation on the problems that I'm having with water-based batteries, and the headache that it has associated with it. And then since then, in my office and in my home, I've installed lithium-ion batteries from BarqBox, and Hmm. it's been smooth sailing. But obviously, there's issues that are external, which are not linked to the internal Hmm. system. So there's a Hmm. problem with the transformer, and then obviously that represents, and you have an issue internally as well. But I feel the services attached to it are exceptional. So whenever there was a problem, within a few hours, doesn't matter what time of day it was solved. So it's not just the technology that I feel that you worked on, it's also the systems behind it that you put together really well. So can you sort of talk to me about how you put that in place? Because I can only imagine when you have multiple customers and managing them and in a very efficient way. I'm just thinking. I remembering एक बहुत मजे की बात थी that one of the professors in Cardiff once said. Um, I don't remember कि वो लेक्चर कौन से प्रोग्राम का था अनफॉर्चुनेटली, एंड वो प्रोफेसर कौन था, बट आई रिमेम्बर कि कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी थी कि टेक्नोलॉजी इज सबसर्विएंट टू इकोनॉमिक्स. इसका मतलब ये है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी बना लो, अगर वो आप उसको इकोनॉमिकली कमर्शलाइज नहीं कर सकते ना, अगर आप उसको एक सस्ते और एफिशिएंट तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, तो उस टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं है. एंड आई थिंक जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल में घर कर गई ये बात. एंड फिर मैंने और मजीद गलतियों से भी सीखा. देयर इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मेड एट बर्कबॉक्स दैट्स पैटेंटेड, एंड आई ओन पार्ट ऑफ द पैटेंट. एंड डिस्पाइट दैट, वो टेक्नोलॉजी मैं अब नहीं कमर्शलाइज कर पाता. उसकी वजह ये है बिकॉज चाइना मेक्स इट सो मच चीपर, राइट. सो हालांकि वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, आई ओन इट, आई वी मेड इट, इट वर्क्स रियली वेल. इट इवन वर्क्स बेटर देन चाइनीज टेक्नोलॉजी ऑफ द सेम category in many cases. But just because we aren't able to make it as cheaply as China can, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो बस पड़ी हुई है. um, सो ये रियलाइजेशन ने मुझे काफी हेल्प किया इन अंडरस्टैंडिंग के if I make the best kind of product that I can make, and I do believe that at this point BugBox is making the best product in the market right now of its class and category. लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द अच्छी सर्विस नहीं होगी, तो कोई पॉइंट नहीं है वो बनाने का. um, और खास तौर पे इट हेल्प्स बिकॉज जो टेक्नोलॉजी और जो प्रोसेसेस हैं वो लोकलाइज्ड हैं, ऑलमोस्ट इंटायरली लोकलाइज्ड हैं. जिसकी वजह से वो सर्विस देना भी आसान है. द कंपनी एंड द टीम अंडरस्टैंड्स द प्रोडक्ट रियली वेल. देर ऑल्सो पैशनेट अबाउट इट. सो एक और मजे की चीज है कि जो मैं अपनी टीम को समझाता हूँ कि विद दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक विद बैटरीज फॉर योर होम, इनकी बहुत लंबी लंबी वारंटीज होती हैं और लंबी लाइफ होती है. 10 साल की लाइफ होती है और मिनिमम से मिनिमम भी 5 साल की वारंटी होती है. तो आई टेल माई टीम कि इफ यू आर सेलिंग अ बैटरी टू अ कस्टमर, लाइक अब मेरी टीम ने आपको बैटरी बेची है, दैट मीन्स कि उन्होंने एक 5 साल की रिलेशनशिप शुरू की है आपके साथ. तो इट्स नॉट जस्ट कि आपने बेच के छोड़ दिया है और आप आगे चले गए हो. आपने वो, यू हैव टू मैनेज कि वो आप थ्रेड, वो रिलेशनशिप को मैनेज करते रह सकते हो कंटिन्यूसली फॉर द नेक्स्ट 5 years while you're also working on your supply chain selling more. तो जब तक वो नहीं होगा तब तक उसके हिसाब से हम एक्सपैंड नहीं कर सकते. आई थिंक इम्पेशेंटली एक्सपैंड करना इज a bad move. You mentioned China. So what I can see from your end is internally, but you're also looking at what's going on in the world. So anyone who's a young entrepreneur and trying to run this in day-to-day problems, and at times I feel that these youngsters don't look outside the box. How important or how valuable was it to get exposure business wise in different countries? And I know you've traveled to China back and forth quite a bit and you met with industry leaders. And as a response, you've also talked to policymakers within Pakistan. So, how important do you think it is looking outside the country at professionals who are global world leaders in your field? आई थिंक वो तो एब्सोल्युटली क्रिटिकल है. आप अपने साइलो के अंदर तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते. um, younger people right now who are looking to go abroad and study will have to realize कि
वो एंड में जो भी कर लें, वेदर दे आर बिकमिंग कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स और एनीथिंग एल्स, वो उनको लार्जर मैक्रोकॉज्म के अंदर एग्जिस्ट तो करना है, तो लिहाजा उनको फिर उसके साथ इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू नो कि आपके इर्द गिर्द क्या पॉलिसीज हैं, क्या टैक्सेस हैं, कैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किन प्लेटफॉर्म्स पे सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो प्लेटफॉर्म्स किस तरह इवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह आजकल एआई ने जो खप मचाई हुई है। या अगर आप हार्डवेयर के अंदर हो लाइक मी, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप सप्लाई चेन अपनी बनाना चाह रहे हो तो यू विल हैव टू वर्क विद डिफरेंट वेंडर्स एंड सप्लायर्स, विच मीन्स कि आपको मुख्तलिफ ममालिक के साथ डील तो करना ही पड़ेगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, इट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओपन अप करना शुरू कर दें एंड यू स्टार्ट टू मीट पीपल एंड डेफिनेटली एक्सप्लोर कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। खासतौर पे अब आई फील लाइक कि things change way too quickly, even as opposed to just how things were 9 years ago or 10 years ago. I feel like the things have just, it's so quick. You really have to keep abreast of what's happening, no matter what your industry is. Otherwise you just wake up one day and you realize कि वो अच्छा यार, ये तो पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है और मैंने फोरसी ही नहीं किया था, मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि ये होने वाला है। Then you sort of become obsolete at that time. हाँ, और पता ही नहीं आपको लगता ना, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन मेक श्योर कि आप अवेयर हो कि शिफ्ट्स कहाँ पे आ रही हैं। So, work-wise, apart from your professional journey, you're doing something really interesting, and that's running Bayan with one, your band members and also your friends. So, या how did you put Bayan together, and where did that come from, and how did it grow? Because obviously I saw it really early on when it was just fun to what it is today. So, can you sort of talk about that journey? या ऑफ कोर्स, आई थिंक when we were in 8th sem together, उस टाइम पे I would dabble, I would play drums, and I was lucky कि उस टाइम पे हमारे अपने ही दोस्त इतने talented थे, people like Shirazam and Afraz, very talented vocalists, guitarists and bassists. um, तो आई थिंक वो एक sort of platform मिल गया था to start. Then later on in college, I would continue to dabble, and I think वहाँ पे हाँ, how it started was around in college, maybe 2012 or 2013. There was a show called Nescafe Basement that started, and it was managed and run by Zulfi Bhai. And when he picked me to play drums in it, उस टाइम पे जो जो बाकी टू बी मेंबर्स ऑफ बयान थे वो भी उसी शो में थे, दैट्स वेयर वी मेट, एंड वी डेवलप्ड ग्रेट म्यूजिकल केमिस्ट्री, और दोस्ती भी बहुत अच्छी होगी। और फिर दैट्स जस्ट हम वी डिसाइडेड कि हम एक गाना बनाते हैं, एंड सो वी रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड अ सॉन्ग कॉल्ड नहीं मिलता उस टाइम पे। और तब इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया था, बस ठीक था। बट वी केप्ट गोइंग, हमें वी जस्ट एंजॉयड इट ऑनेस्टली, वी डिडंट रियली, हमारे जिन में ऐसा कोई गोल नहीं था कि हम बयान बन जाएं जो आज है। वी जस्ट wanted to make music, it was fun, we all had, we were studying, and after studying we wanted to do our own professional um, endeavors करना चाह रहे थे हम। uh, या हम बस we kept on playing and performing. इनिशियली वी वुड मैनेज आवरसेल्व्स, यानी मैनेज से मतलब ये है कि कॉन्सर्ट्स का आना और सारा कुछ हम खुद ही करते होते थे। बट देन एज थिंग्स स्टार्टेड टू ग्रो, वी बिल्ट अ टीम, वी नाउ वी हैव अ मैनेजर, वी हैव अ साउंड इंजीनियर एज वेल। तो वो लॉजिस्टिक्स वगैरह मैनेज करना, अब वो ऑपरेशंस काफी ग्रो कर गए हैं। आई ऑलवेज थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कभी कभार नहीं भी सोच रहे होते ना एम्बिशियसली, तो फिर भी ऊपर वाला कभी कभार हाथ पकड़ के आपको ले जाता है एक जगह पे, एंड देन इट रियली स्टार्ट्स टू बिकम समथिंग यू हैव टू मैनेज। कि अच्छा यार, ये चीज बन तो गई है अब, ये पूरी इस स्केल पे आ तो गई है, अब कैसे इसको चलाएं। वन अदर एस्पेक्ट इज कि आई थिंक व्हाट हेल्प्स इज कि हम सारे बैंड मेंबर्स बहुत वेरीड हैं। हम बिजनेस स्कूल के पढ़े हुए लोग भी हैं, हम म्यूजिक स्कूल के या चलो एनसीए के पढ़े लोग वाले लोग भी हैं, different walks of life, and so that brings together very different viewpoints on how to look at what bayan is. मतलब we can be a music making band, we could also be we also make merch, उसका एक पूरा supply chain और वो aspect भी बीच में आता है, जो logistics and promotions हमने करनी होती हैं when we publish our content, या when we want to do concerts within or beyond Pakistan, उनके logistics और planning.
So you can't escape the business aspect of creativity, even if you're not doing music. अगर आप बेशक कुछ और भी कर रहे हो, बट वो जो बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी है वो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेट करता है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ वो करना। I think well, that's quite interesting, but because what happens is everyone then gives their natural input within the band. So या I mean, when you're in college, it's really easy and then to, take time out for expression and music and running a band together. But I think as you get older, the responsibilities sort of kick in. हम्म So it's not easy, but how do you manage one running multiple ventures and at the same time running your band as well? Because I know you're performing all the time and in different cities. So it can be hectic. How do you manage that and then at the same time manage your personal life as well? हम्म I mean, you and I and our friends, we have a weekly Friday chilling hang thing. अब तुम खुद ही बताओ मैं लास्ट कब तुम लोगों को ज्वाइन किया है मैंने। So, वो मुश्किल तो 4 महीने हो गए। है। आई थिंक कहीं ना कहीं से तो आपको टाइम निचोड़ के लेके जाना पड़ता है। एंड ऑल्सो अगर आपकी हेल्थ है साथ तो क्यों नहीं हो जाती हैं चीजें, यू रियली स्टार्ट टू चेरिश टाइम एंड हेल्थ लॉट मोर। लेकिन यार ऑनेस्टली हसन, आई फील लाइक कि अगर आप क्रिएटिविटी के लिए टाइम ना निकालो ना तो फिर आपसे आप कोई और काम होता नहीं है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको जरूरी है निकालना, इट्स नॉट जस्ट कि टाइम कैसे निकालने, आई थिंक जरूरी होता है। इट्स लाइक अ रिफ्रेशमेंट, इट्स लाइक अ ब्रेक। I feel like Mhm. at some points I even feel कि the point is actually to be creative। वो जिंदगी itself का आपने जो आप कर रहे हो उसमें major point is to just exist, to be creative। बाकी अपने लैपटॉप पे कोई काम शाम करना वो secondary होना चाहिए। But yeah, the creativity seldom does not pay the bills, so you have to mix and match it। Um, I agree. और आई थिंक इसके लिए जो मेरे लिए पर्सनली जो चीज़ है ना वो आई थिंक आई एम जस्ट अ क्यूरियस पर्सन टू बी ऑनेस्ट, दैट्स जस्ट इट। आई जस्ट वांट टू सी कि होगा क्या इफ आई कीप ऑन पुशिंग, इफ आई कीप ऑन ट्राइंग, इफ आई कीप ऑन गोइंग, क्या होगा, लेट्स सी। वो क्यूरियोसिटी आई थिंक इज इनफ टू कीप मी waking up in the mornings and going to work। That's quite interesting. So one thing that I see with a lot of parents is that they feel that their child is wasting time if it's anything other than academia, which probably they don't understand as well. So, I mean, an example is playing on the drums for hours. An हम्म example is playing, at times playing video games, at times, going and pursuing a particular sport. What advice would you have for parents who feel that their child is wasting too much time on a particular activity? हम्म Um, which potentially could benefit them. Because I remember with हम्म you, it was whenever we went to your place, um, you just grab the drum set and you'd be banging away for hours. हम्म So, I mean, I guess as a parent, you would think, what the hell is he doing? So, how do you manage that? And what advice would you give to those parents? हम्म I'm really grateful that my parents never stopped me or restricted me। वो बल्कि अलबत्ता उन्होंने encourage किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा encourage किया है। and I think कि बयान owes my parents a lot for their initial support। हमें हमेशा से जगह मिलती थी, हम जितना शोर मचाना चाह रहे हैं हम मचा लेते हैं। But I also understand parents' ka perspective a lot more now। I feel like कि what parents just want is that their child engage in an activity जो monetizable हो, जो एक future security दे सके, financial security दे सके। I think it would help if parents and their children were to have more honest and vulnerable conversations, because I feel like a lot of parents don't understand कि अब जो creator landscape है वो बहुत बहुत बदल चुका हुआ है। अब जैसे यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम है, या अगर आप मेटा पे अब रील्स को मोनेटाइज कर रहे हो, दैट्स अ डिसेंट फाइनेंशियल मॉडल टू गेट इनटू। एंड वन कैन अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी थ्रू दैट, which can also be recurring and reliable as well। उसके एग्जांपल्स दिखाए जा सकते हैं। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि ये आप सिर्फ फोन पे या लैपटॉप पे नहीं लगे हुए, ये एक्चुअल लेजिट काम है। um, I have some friends जो कोडिंग करते हैं and they're younger, but उनके पेरेंट्स इतना सपोर्टिव नहीं है फॉर कोडिंग।
कैन यू इमेजिन, मतलब उनको लगता है कि बस ये लोग बैठे हैं अपने स्क्रीन पे. सो Well, आई थिंक if to them at times it can be hours sitting on just a laptop. एग्जैक्टली, आई थिंक वो पेरेंट्स खुद से नहीं समझ पाएंगे. हमारी जनरेशन को, या जो यंगर बच्चे बच्ची हैं, दे नीड टू हैव दीज कैंडिड कॉन्वर्सेशंस विद देयर पेरेंट्स. It's easier said than done, I realize, but it's very important for parents to realize कि अब how you engage with work and what work even is totally different from what it was 30 40 odd years ago. वो बहुत जरूरी है. Yeah. एंड आई थिंक कि नाउ हमारे जो पेरेंट्स हैं, दे कम फ्रॉम अ माइंडसेट वेयर दे फील लाइक डूइंग वन थिंग एंड वन थिंग ओनली फॉर मेनी मेनी इयर्स इज द वे टू गो. आई थिंक अब लैंडस्केप बहुत शिफ्ट हो चुका है ऑफ प्रोडक्टिविटी इटसेल्फ. अब आई थिंक इट मेक्स सेंस टू डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम. नॉट जस्ट बिकॉज आप फाइनेंशियली कवर्ड हो, कि अगर एक इंडस्ट्री नहीं चल रही है, दूसरी चल रही है, तो आप कुछ कवर्ड हो, बट ऑल्सो बिकॉज सारा कुछ कनेक्टेड है. आप म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करके कोई ना कोई चीज किसी टेक्निकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में सीख सकोगे, या वाइस वर्सा. कोई ना कोई चीजें इंटर ऑपरेबल होती हैं, और आप जनरली आप सीख ही रहे होते हो. और अगर आप, एंड देन लास्टली आई थिंक माय पॉइंट वुड बी कि इफ यू आर इन योर early 20s or even your early 30s, you must realize as you zoom out, this is most likely the physical and psychological prime of your life. इसके अलावा आपको टाइम तो मिलना नहीं है. आपके बच्चे हो जाने हैं, आप बूढ़े हो जाओगे, आपके पास वो एनर्जी नहीं होगी, वो दिमाग नहीं होगा, वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, या रिस्क अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी. तो ये 2 डेकेड्स ही हैं, तो उसमें आप कोशिश कर लो, को 3 4 5 चीजें करो, नींदें खराब कर लो अपनी, कुछ नहीं होता. आप बाद में सेटल करके एक चीज कर लेना. That's quite an interesting approach. Obviously, that is with a balanced approach at the same time, because I know personally you do focus on your health and you do give yourself time. And when you don't and you're working on multiple projects, once it's done, you always take time out for yourself. So I think ये balance करना भी बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. मैं नहीं करता बिल्कुल भी. आई डू होप कि लोग मेरे से ना इंस्पायर हों इस चीज में. आई एम इनक्रेडिबली अनहेल्दी. मैं बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख पाता. आई थिंक जब से मेरी शादी हुई है, तब से कुछ हालात बेहतर हुए हैं मेरे. माय वाइफ काइंड ऑफ पुट्स दैट बाउंड्री ऑन फॉर मी कि नहीं यार, आई थिंक यू टू एग्जॉस्टेड नाउ, अब तुम रेस्ट कर लो. बट आई डू हैव अ टेंडेंसी टू नॉट रेस्ट. यस. Chalo, yeah, that's good. Thank you so much, Mansoor, for taking the time out. We've got a few questions that some of our students have pushed out there. I'm just going to ask them one by one. So we've got a question from one of our students. What piece of advice would you have for young creativity, for young students who are into music currently and exploring different creative ventures? यार ये पता है, इसलिए मुश्किल सवाल है क्योंकि अब बहुत इस वक्त आई फील लाइक कि लैंडस्केप बहुत चेंज कर रहा है. सो ओके, मैं इस तरह बताता हूँ. म्यूजिक में क्या हो रहा है कि अभी पब्लिशिंग करने का तरीका इज मोस्टली स्पॉटिफाई. एंड आई थिंक स्पॉटिफाई का मॉडल थोड़ा सा वीक है. इट डजंट पे आर्टिस्ट वेरी वेल. एंड सो नाउ आई फील लाइक जनरली जो अवाम है दुनिया की, जो जो क्रिएटर्स हैं, दे वांट सम ऑल्टरनेटिव. सो depending on how ambitious you are, maybe you can try to figure out के alternatives क्या हो सकते हैं. एंड ऑल्टरनेटिव से मतलब ये है कि अ वे टू पब्लिश म्यूजिक जिसके अंदर जो लोग सुनना चाह रहे हैं म्यूजिक, वो भी वो भी कॉम्पनसेट हो, उनको एक्सेस मिले टू म्यूजिक, और जो म्यूजिक बनाना चाह रहे हैं वो भी अच्छी तरह कॉम्पनसेट हो, उनको अच्छे खासे पैसे मिले, एंड वो दोनों चीजें मीट कर सकें. मजीद और क्रिएटिव चीज़ों में अगर आप कोई डिजाइनिंग वगैरह करते हो, तो उसमें एआई का रोल जो है, आई थिंक वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसको. एज मच एज आई रियली डिसलाइक सेइंग दिस, बट आई फील लाइक वो इनएविटेबल है, और टेक्नोलॉजी के चेंज से आप लड़ नहीं सकते. क्रिएटिविटी किस कोई एल्गोरिदम कर रही हो, वो मेरे से हजम नहीं होती. बट अब हो रही है तो हो रही है, क्या करें. यू कांट जस्ट, आप बच्चों की तरह ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने नहीं करना, देन इंडस्ट्री कहीं और चली जाए. So maybe trying to Can't be lean in into, denial. yeah, I can't be in denial. I think leaning into AI is probably the smarter move, as much as I don't want to say that. उसके अलावा आई फील लाइक ये दोनों चीजें कंबाइंड के, द वे रेवेन्यू मॉडल्स आर रैपिडली चेंजिंग एंड द वे ऑटोमेशन एंड एआई इज कमिंग इन, आई थिंक इस वक्त चीजें बहुत फ्लक्स में हैं. सो इट्स हार्ड फॉर मी टू गिव एडवाइस दैट्स लॉन्ग लास्टिंग.
The only advice that can possibly be long lasting is to say कि be as flexible as you possibly can be. Nothing's off limits, nothing's off, off the menu, so to speak. आप बस try as much as you can to see कि overall जो industry किस direction में जा रही है, and try to propel yourself उस direction में. I think that's good advice. So, what's one mistake you made early in your business that taught you a very valuable lesson? Yeah, shit. So many, so many mistakes. आई थिंक काफी मिस्टेक्स इस कैटेगरी में आती हैं कि डोंट फॉरगेट कि आपका जो बिजनेस है या आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, वट एवर इट इज दैट यू गिविंग टू पीपल, उसके ऊपर एक अनडिनाएबल येट स्लाइटली इनविजिबल लेंस है आपके कल्चर का. उसको आप भूल नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, maybe if you're in the US, you can probably buy a car or like a Tesla online. आप ऑनलाइन खरीद लोगे और वो घर पे डिलीवर भी शायद हो जाएगी. बड़ी फैसिनेटिंग बात लगती है. यू हैव Amazon प्राइम, एक दिन में चीज आ जाएगी. सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आप अब रिसेंटली जाके लोग QR कोड्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस करना चाह रहे हैं, विच इज स्ट्रेंज. हालांकि दुनिया में सो मच मोर कॉमन. आई थिंक मैंने अच्छा एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन द द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप जो भी बिजनेस मॉडल लेके आ रहे हो, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके कल्चरल लेंस क्या है, लोग कल्चरली इसको किस तरह उसको परसीव करेंगे. नॉट एवरी मॉडल दैट यू सी इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल वर्क हियर. एक और मेरे ज़हन में जो अच्छा एग्जांपल एक्चुअली मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं इसको समराइज कर लेता हूँ. जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के दुनिया में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्वैपिंग योर बैटरी पैक. सो you're on a bike or a scooter, and if you want to charge, instead of charging you go to a station that's like a little, that's a grid जहाँ पे बैटरीज लगी हुई हैं, and you take out your batteries, put it in that rack and take fresh ones out, and you put it in your electric two wheeler, and you pay little money for that. Usually that's done online, as we've seen in the world. ये मॉडल काफी लोग पाकिस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं. वो इतना, आई वुड से, सीमलेसली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ का कल्चर फर्क है. यहाँ पे लोग जट हैं, वो बैटरी तोड़ देंगे, वो चोरी कर लेंगे. बैटरी के ओनरशिप के और चैलेंजेस आ जाते हैं. लॉट ऑफ लार्जर कंपनीज डोंट हैव द फाइनेंशियल मसल टू पुल इट ऑफ. सो आई फील लाइक कि इस तरह के जो मॉडल्स हैं ऑफ एनी टाइप, उनमें आपको अपने कल्चरल लेंस को नहीं भूलना, वरना होगा ये कि आप परफेक्टली एक इंटरनेशनल मॉडल यहाँ पे अप्लाई तो कर लेंगे, वो चलेगा नहीं, फिर आपके बहुत ज्यादा पैसे और टाइम जाए हो जाएंगे. I mean, that's interesting advice. So, you can't just copy paste something that's working internationally. You have to tailor it to your own market. या या एब्सोल्युटली. Brilliant. So, what advice would you give to yourself if you were 18? ओए, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. आई थिंक इट्स, मेरे से ज्यादा फॉर 18 ज्यादा पर्सनल चीजें ही आ रही हैं. बट आई थिंक व्हेन आई वाज अ young boy, I was timid and scared most of the time. For reasons I probably won't get into यहाँ पे, but I think if I could give myself advice in that age, I would say कि यार, the avoidance of pain usually leads to more pain. So डर के पीछे हटने से बेहतर ये है कि बस घुस जाओ और कर लो जो करना है. Mhm. And I think maybe that's also why you got into boxing. हाँ, एब्सोल्युटली फुल ऑन कॉम्पनसेशनरी सीन था कि बस मुझे डर लगता रहता है, सेफ नहीं फील करता, तो यार कोई लड़ना ही सीख लेते हैं. And do you think that changed in terms of your personality or helped develop it? आई थिंक हाँ, कुछ, इट वाज अ हेल्दी एक्टिविटी. सो आई थिंक वर्जिश करना जनरली इट हेल्प्स योर एटीट्यूड एंड इट हेल्प मी फील कॉन्फिडेंट. अब ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफरेंट. अब तो आई डू फील सेफ इन माय ओन बॉडी, इन माय माइंड. सो अब इट्स मोर लाइक बस कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही हो. बट या उस टाइम पे डेफिनेटली Mhm. आई वुड गिव माई सेल्फ दैट एडवाइस. All right, that's good. I've got a really interesting question. What's your proudest moment since graduation? यार आई थिंक वो प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कोई नहीं है, वो कहीं फ्यूचर में है. अभी इंतजार में है, अभी तो नहीं है Oh, कोई. okay, so you're working towards that. हाँ. But Mansoor, thank you so much for taking your time out. This was a really insightful conversation. I really hope it's helpful for the younger audience to get inspired, think beyond boundaries, and in a healthy way to push themselves to
one, develop their abilities and also serve better purpose. May that be professionally, may that be personally, and as individuals grow. But thank Yeah, you so much absolutely. for Hassan, this. thank you for having me. And I hope that the young kids who view this, I hope they feel that it's okay to come back to Pakistan as well and to keep their options open. Um, and जहाँ भी वो जाएं, जो भी वो पार्ट प्ले करें, बस वो फुली तरीके से पार्ट प्ले करें. I agree. May that be in Pakistan, may that be in international market, it's absolutely fine. The aim is that you develop yourself, your skills, and then you contribute locally, yeah, globally as much as you can. Hmm. Because at the end of the day, your roots are always attached. Yeah. So may that Yeah. be that you're coming back initially, may that be you're visiting and just providing input. May that be you're living abroad and just providing economical benefit. That's Hmm. absolutely fine. The main Hmm. aim is that you should look for the best opportunity for you to develop and grow. Yeah, exactly. Exactly. Chalo, thank you so much. And hopefully you have a safe trip to Islamabad and I shall speak to you soon. Yeah, thank you for having me, Hassan. Yeah, this was really fun. Best of luck for everything. Thank you.